comfortable. They can be on video. Call is now being recorded. And no, Sorry, I'm not very. no, that's fine. That's what I'm saying. So most of my students in this class, right? They are housewives, and they are not really comfortable being on video, and that's perfectly fine. See, I mean, my message to my students is always that no, if you're on video, if you make eye contact and then talk, that adds a different level of confidence. But it's okay. I mean, that cannot be the only criteria for no, or the only condition for this class to be effective. You know? Okay, so let's get started. From today, I have started a new thing again. When you guys will talk, I will not interrupt you in between, but I will keep noting down if I find some opportunity for correction. Okay, so we'll start with two words since only two of you are there. So this gives us more time to practice, right? So let's start with the two words first, then we'll see what all we can cover. So who wants to go first, Anjali ji or Goldie? Yes, sir. You want to go first? Yeah, I Who can. is okay? Who is ready? I mean, go ahead. Yeah. Hmm. Yeah, Goldie, you can go ahead. Okay. My first word is lagging. Okay. Lagging means, like I'm giving two examples. Like the education system is lagging behind a bit in Bihar. Mm-hmm. Uh, in the last election, the party of RJD was lagging behind of BJP. Okay. Yeah. And my second word is ambigu. Okay. Okay. So what we'll do is, Yeah. like you would have seen the videos. Once we mix few sentences with the word that we want to share, we will also Hmm. look at the pronunciation, just to see if the way we pronounced was correct or not. How does American? I mean, how do Americans pronounce that? And we'll just do any fine tuning needed. Okay. This is सुनिएगा इस ये lagging को how do they pronounce? Okay. तो ध्यान दीजिएगा. Lagging. So so सबको अपना शर्म लिहाज छोड़ दीजिए. We will just pronounce this 4 5 times. Okay, I'll start. So lagging, lagging, Lagging. lagging, Lagging. 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 Yes, sir. Lagging. See, and the purpose of doing so is because we pronounce any word depending on the dialect that we are used to. Okay, so अपने लोकल डायलेक्ट का जैसे मैं बिहार से हूँ तो मेरे आंगिका बोली जाती है. गोल्डी आंगिका और मैथिली दोनों ही बोलती है. आई एम श्योर अंजलि जी आप भी एक लोकल लैंग्वेज कुछ बोलते होंगे, राइट? या भोजपुरी हो या मगही हो, जो भी हो, या हिंदी ही बोलते होंगे. Yes, तो sir. जो भी हम भाषा बोलते हैं उसका एक इफेक्ट होता है हमारे हमारे हमारा मसल्स उस हिसाब से ऑर्गेनाइज हो गया होता है. सो व्हेन वी प्रोनाउंस दिस वी काइंड ऑफ ट्राई ट्यूनिंग आवर मसल्स, जो अपने चेहरे में जितने मसल्स होते हैं जो कि प्रोनाउंस करने में काम आते हैं, जीभ से लेके बाकी सारा मतलब लोअर अपर जाओ, उसको हम लोग ट्यून कर रहे होते हैं भाई कि आपको अंग्रेजी बोलनी है तो ऐसे बोलनी है. ठीक है, दैट्स द रीजन वी डू प्रैक्टिस, है ना. सो लैगिंग दैट्स व्हाट वी लर्न, राइट? ओके. Lagging. तो इसको हम बच्चों वाले क्लास में मैं बोलता हूँ सबको चलो जयकारा लगाते हैं, और सबको एक बच्चे को 5 5 बार बोलने बोलता हूँ. तो आप लोग भी वैसे ही इसलिए बोलता हूँ, मतलब इस सीखने के क्रम में ना शर्म झिझक वो सबको हम लोग नहीं रखें. ठीक है, ओके. चलिए गोल्डी आप कंटिन्यू कीजिए, आपका दूसरा वर्ड बोलिए. Yeah. My second word is ambigu. ओके. हाउ डू यू स्पेल Ambigu. इट? Uh, हाउ डू यू huh? स्पेल इट? हाउ डू यू स्पेल इट? Spelling हाँ. AMBIGUE. Ambigu. ओके. एमबी. Yeah. ओके. And examples is like his answer is ambigu. The government has been always ambiguous on his issues. हम्म. Like, please give me ambiguous answer. हम्म. We, Okay. everything we should understand from ambiguous. ओके. That's it. ओके, वेरी नाइस. And what is the meaning of ambiguous? अब देखिए, आपने सुना होगा एम्बिग्विटी, Yeah. कंफ्यूजन. तो दिस इज Okay, द, confusion. हाँ, एम्बिग्विटी बोलते हैं ना. दिस प्लान हैज लॉट ऑफ एम्बिग्विटी. आई डोंट डू एनीथिंग व्हिच हैज एम्बिग्यू इन इट, राइट? उस तरह से है एक्चुअली. ठीक है. The perplexed also means confusion. परप्लेक्स्ड मतलब उसमें थोड़ा उसमें
कंफ्यूजन और हेलुसिनेशन को मिला देंगे अगर, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड परप्लेक्स्ड। मतलब Okay. एंग्शियसली कंफ्यूज्ड, मतलब ऐसा कुछ सोच सकते हैं। Because Yeah, I read somewhere the synonym of confusion is perplexed. हाँ, नहीं वही बोला, परप्लेक्स्ड इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ फीलिंग। Confusion, you could be confused for a small thing, a big thing, or when you're confused and surprised together. That is when you say perplexed. मतलब वो थोड़ा भारी भरकम word actually. If you say I'm confused, you are using simple English. If you say this makes me perplexed, तो लगेगा कि बहुत ज्यादा नहीं था, मतलब लिटरेचर वाला आदमी है, ऐसा बोल सकते हैं। And ambiguous means simply confusion. Ambiguous confusion. Okay. तो इसका adjective of ambiguous, ambiguous. That's how you mostly use it. yes. Yeah. Okay, चलिए, Preeti ji is joining. All right. Hello, Preeti ji. Good morning. Good morning. So, Preeti ji, this is your first class. Thank you for joining. Yes, yes, yes. Thank you, sir. Welcome. So, this is a smaller group of enthusiasts who are all housewives, and they are wanting to kind of housewives. And Anjali ji is the only one who is not a housewife yet. But again, a group of ladies, girls, whatever you call it, who are trying to learn English and make English a part of as a part of their routine basically. So खुशखबरी ये है कि इस क्लास में पैसे नहीं लगते. So this is totally free. Only commitment I ask from all the participants of this group is कि आप ज्वाइन कीजिए और एक दो लोगों को ज्वाइन भी कराइए, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि it actually solves two purpose. One is obviously it gives you more students, and second purpose is when you make some people join, and that becomes your network for your practice actually, because in any class whatever you do, that will only last for the duration of the class. तो क्लास के बाहर जो आपको प्रैक्टिस करनी है, that is where those people whom you are joining along with you, whom you are motivating to join along with you, that becomes your ground for practice. Okay. So, Preeti, I hope you understood what I was saying. So basically, we'll start with a quick introduction for you. So the things that we do in this class is based on simple principles. ठीक है, पहला तो ये करते हैं हम लोग कि एक ओनली कमिटमेंट आई आस्क ऑल माय पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस क्लासेस कि आप डेली दो वर्ड सीखते रहेंगे, दो वर्ड सीखेंगे, उसके सेंटेंसेस बनाएंगे, एंड यू विल कीप प्रैक्टिसिंग देम. सो एक वीक में जो 14 वर्ड्स होते हैं, उसमें से कोई दो वर्ड आपको सुनाना पड़ता है इस क्लास में कि भाई देखो मैंने आई लर्न दीज टू वर्ड्स एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस. ठीक है, तो वही अभी हमने स्टार्ट किया था. सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैड जस्ट, it was only Goldie who had shared two words, lagging and ambigu. So these are two words that she shared and sentences, and then everything is getting recorded. So अब चाहे तो बाद में वीडियो देख करके भी you can kind of do a recap of what was done so far. Okay. Okay. All right. तो आप भी सोच लीजिए प्रीति जी, what are the words that you would want to share, and it need not be a very complex word, simple words, simple sentences. That's what we start with. मतलब पहले तो है कि इंग्लिश का डर को निकालना है कि भाई इंग्लिश बोलना है, उसका जो घबराहट जो होती है उसको किल करना है. शर्माना झिझक नहीं रखना है इस क्लास में, गलती होगी होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, विल कीप ऑन करेक्टिंग देम. ठीक है, चलिए, लेट मी नॉट make my speech long enough. Let's go to Anjali ji and see what all Anjali ji wants to share. Hi Anjali ji, good morning. Shall I start, sir? Yes, With my please. two words? Okay. So my first word is patience. Patience means sabr. Hmm. And the sentence related to patience is success needs patience and time. Okay. Patience is the best remedy to keep calm and quiet. Mm-hmm. Patience is bitter, but it bears
sweet fruit. Very nice. They thanked him for showing so much patience. Hmm. Uh, he doesn't have patience to wait. I don't have patience to wait so long in the queue. Mhm. Have patience, the bus will come soon. Very nice. That's all for my first word. हाँ, And the तो थोड़ा सा रोकूंगा आपको अंजलि जी। देखिए, पेशेंस का प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आई विल नॉट make you guys stress on that. Patience is patience, and it's easy. I mean, commonly used. We don't make much mistakes. Now, one thing I want to point out, or want all of us to be mindful of, कि when you say something, you have to always remember: am I talking about one thing or multiple things? The sentences that I'm going to make out of this is, you are going to make sentences, meaning more than one. So you Yes, have sir. to emphasize on the sentences are. ये एक बहुत नॉमिनल सी गलती है, बट उसका असर बहुत ज्यादा होता है। तो ऑलवेज बी केयरफुल विद दैट। जल्दी नहीं है, आप आराम से बोलेंगे, लेकिन just force yourself to think about it, whether I'm going to talk about one thing, so I'll use is. If I'm talking about more than one thing, I'll say are. थोड़ा सा कोशिश कीजिए, कोशिश लगेगा इसमें, लेकिन वो गलती होती है, इसको थोड़ा अवॉइड करना है। मतलब गोल्डी जी, मैंने भी आपका आपका okay, ऑब्जर्व किया so था। you are trying to say that the sentences are related to patience, and I'm saying हाँ that the sentences is. हाँ, आपने वहां से शुरू किया था, Okay, मुझे लगा कि आप एक सेंटेंस बोल के रुक जाएंगे, बट आई न्यू दिस इज अ टीदिंग प्रॉब्लम दैट वी ऑल गो थ्रू इन द बिगिनिंग। वो होता है, नॉर्मल, okay, sir. बड़ी बात Okay. नहीं। जस्ट बी Now I लिटिल केयरफुल। always remember. इसलिए तो मैं इसको इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ कि थोड़ा रजिस्टर हो जाएगा बस, उतना ही। Okay, so my second word is devoted. हम्म Devoted means samarpit karna, हम्म and the sentences related to devoted are हम्म she was a devoted mother. हम्म Um, Rishi devoted the rest of his life in charity. फॉर चैरिटी। Okay, for charity. हम्म Yes, for charity. Uh, Devoted. Not everyone's capacity to devote all his life for caring people. हम्म He devoted his life for scientific research. हम्म That's all, sir. वेरी नाइस। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका अंजलि जी, और गोल्डी आपका भी, दोनों का। यहाँ पे कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी वर्ड आए ना, उस पे 2-3 सेंटेंस पे नहीं, मतलब 5-6 सेंटेंस दागना है कम से कम, सो दैट इट स्टार्ट्स कमिंग नेचुरली। ठीक है, आपने काफी अच्छा कोशिश किया अंजलि जी। यू मेड श्योर दैट नो यू आर नॉट स्टॉपिंग एट 1 or 2, यू वेंट ऑन फॉर 5-6 सेंटेंसेस दैट आई लाइक्ड। गोल्डी, आप भी 2-3 के बाद मत रुकिएगा, आगे से कोशिश कीजिएगा 3-4 सेंटेंस तो दागना ही है कम से कम, है ना? Yeah, okay. हाँ, मतलब इसको अंग्रेजी को जुबान पे बिठा देना है, मतलब अंग्रेजी उतरे नहीं, ऐसा होना चाहिए। लोग बोले कि भाई कितना अंग्रेजी बोलोगे, अब तो हिंदी बोलो। ओके, चलिए प्रीति जी, यू हर्ड अंजलि जी एंड गोल्डी जी बोथ। डू यू वांट टू शेयर 2 words from your side? And again, it can be any word that you are comfortable with. This is your first class, so you have that luxury today. Yes, sir. तो अभी कोई 2 वर्ड से कुछ सेंटेंस सुनाइए, जो आप सबको, यहाँ पे हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा पढ़ा ही होगा, तो उसमें से कोई 2 वर्ड पिक कीजिए, सुनाइए कुछ सेंटेंसेस। My first word is faithful. फेथफुल, ओके। Faithful meaning Vishwas. हम्म I am very faithful for my mother, father. हम्म Mm. Faithful is very necessary of our family. being faithful is very necessary for the family, yes.
you'll say being faithful, क्योंकि faithful is very necessary for the family बोलेंगे तो लगेगा कि faithful is a noun, मतलब कोई आदमी है ऐसा लगेगा, है ना, थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे, being faithful because it's a nature, है ना। Okay. हम्म। और मैं गलती Today, निकाल sir, दूं उसको लेके बुरा मत मानिएगा। no, 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 sir. हाँ, So today I am not prepared. दैट So इज ओके। आई मीन सी, मेरा आपको मैंने धक्का मार के बोलने के लिए मजबूर किया बिकॉज दैट इज द फर्स्ट माइलस्टोन फॉर ऑल ऑफ अस। आपने yes, जिस दिन yes. ये कोशिश की कि मैं मुझे अंग्रेजी बोलना है, कहीं से शुरुआत कीजिए, गलत शुरुआत हो तो भी चलता है, बट इफ यू डू दैट, व्हेन यू प्रेस दैट बटन, दैट इज व्हेन योर जर्नी बिगिंस। तो आपने वो बटन प्रेस कर दिया, सो यू हैव वोन 25-30% द बैटल ऑलरेडी। बाकी अब जो है मेहनत से होगा। Okay. थैंक यू सो मच प्रीति जी। अर्चना जी, योर टर्न। But I'm not ready this time. क्या हो गया? मुझे लगा कि आप तो हमेशा जोश में रहते हैं, आपके पास तो हमेशा टॉपिक्स भी रहता है, Sir, हम लोग तो it's टॉपिक पे जाएंगे। paining in my teeth. ओके ओके, सॉरी सॉरी, नो नो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बट even when you are not able to speak, make sure that you are listening to everybody else, so that way at least no Yes, sir. your revision Yes, sir. continues. Okay, so the second thing which is going to be uh, either a topic that you can share, मीनिंग आप लोग सोच लीजिए, आप लोग जो भी टॉपिक पसंद हो, चाहे चाहे अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में, अपना करियर एस्पिरेशन के बारे में, अपना कोई पैशन के बारे में, क्रिकेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, फुटबॉल के बारे में, जो भी आपको पसंद हो, सीरियल्स के बारे में, यहाँ पे तो मतलब सीरियल्स वाले लोग हैं, आप लोग में से कुछ लोग तो सीरियल्स देखते ही होंगे, उसके बारे में जो भी आपको, एनीथिंग यू टॉक अबाउट अ सीरियल दैट यू हैव वॉच्ड रिसेंटली which you are passionate about, there could be some program on the TV that you never want to miss, जो भी है शेयर करने के लिए 5 से 10 लाइन में आप जो भी शेयर करना चाहें कर सकते हैं। सोचिए कौन सा होगा इंटरेस्टिंग, देन जब रेडी हैं हाथ खड़ा कीजिए, फिर सुनाएंगे क्या सुनाने के लिए। बिकॉज सी अल्टीमेटली माय ऑब्जेक्टिव इज आई विल फोर्स यू टू टॉक, एंड व्हेन यू टॉक आई विल फाइंड मिस्टेक्स एंड वी विल कीप ऑन करेक्टिंग दैट, सो दैट वुड बी आवर अप्रोच। ओके, और मैं भी बोलूंगा, कुछ सिखाऊंगा भी, आई विल टॉक अबाउट ईडीएम्स आल्सो, तो विल कम टू दैट, बट आप लोग को हेड्सअप इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग रेडी होना शुरू हो जाइए, व्हाट टॉपिक यू वांट टू टॉक अबाउट। तो अंजलि जी, गोल्डी जी, आप लोग दोनों सोच के रखिए धीरे धीरे, तो 1-2 मिनट का टाइम है सोचने के लिए, और उसके बाद देन वी विल स्टार्ट। Sir, for random topic, I don't need time to think because I don't, I don't mean perfect. I'm not perfectionist in English. So, shall I start on basic topics like my school life? Yeah, yeah. Because in this, what I'm thinking about this. Yep. No, you can see, that's what I'm saying. When it comes to communication, there is no discrimination. You can pick anything that you want to talk about, because our ultimate objective is you talk. Yes, sir. तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए। See, I'm using pen and paper. I'll keep noting down wherever I find something to give you the feedback. I'll not disturb you. You keep going on, and once you come to the end, then that is when I'll give the feedback. Okay. Okay, And okay, if you have sir. any question, you can obviously ask me what will be the right thing. Okay. So if I stuck anywhere, so I can ask you. 100%. Okay. So I want to share my school life, my school journey. That earlier I don't tell you that I am from Jabalpur. Recently I shifted here, Varanasi. So my whole education is from Jabalpur. So uh,
my parents got admission. My parents got admitted me in MP board school, so Hmm. it was very easy for me to for surviving in MP board school. Huh. It was good for me, but after eighth, but after seventh standard, when I passed seventh standard, so my father admitted me in ICSE board. So when I get admitted in ICSE board school, so that in ICSE board English was very tough for me. So after my first term, when I attended my first term, after that I realized that English is very hard for me. So I told to my parents that it is not just of my taste, so Hmm. I want to quit that school. Hmm. And please get admission in CBSE board or in MP board. I am very comfortable in MP board or CBSE board, but my father and my mother uh, makes me understand to uh, to that if you want any coaching, so I provide you, but you don't need to quit this school. So somehow time passes, and through which I also gain much and much knowledge, and then after ninth class, after 1.5 hour half year, I feel that no, I can do it. Anyway, in ICSE, because in ICSE board na, there is um, four types of books like literature, like poetry, sonnets, and drama, different things. Hmm. So it was very hard for me, but when I passed no, I shared one thing that when I am in 12th standard, because I got as compared to all subjects, I got very least marks in always in English. So when I was in 12th standard, in pre-board exam, my English teacher challenged me that you were not passed 12th board if you do like this. But Hmm. I score 70 plus marks in English subjects. So she was very happy that I challenge, because of my challenging, you got these marks, and I am very proud of you. Hmm. That's all, sir. Very nice. So the I last, don't know what I am speaking or not, but only I had tried. नहीं नहीं नहीं, see that is the beauty of English. You will not know. It's like आप लोगों ने देखा होगा जो जैसे पहले जो क्या बोलते हैं वो जो स्टीम इंजन बोलते थे, राइट? जो पहले जो गाड़ियां होती थी ट्रेन, जो उसमें स्टीम इंजन होता था, राइट? कि उसको Yes, sir. स्टार्ट होने में ना बहुत टाइम लगता था, धीरे 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 स्टार्ट होता था, बट वंस इट पिक्स अप, राइट, देयर इज नो स्टॉपिंग. So that's exactly what happens with English speaking also. कि शुरू में होता ना कि वो स्टीम इंजन है, वो गर्म हो रहा है हो रहा है, धुआं छोड़ रहा है, मतलब इट टेक्स टाइम टू नो टू गेट स्टार्टेड Yes, sir. ना. उस समय सबसे ज्यादा जोर लगता है, मतलब कोई भी गाड़ी भी आप स्टार्ट करते हो ना तो फर्स्ट गियर में ही सबसे ज्यादा ताकत लगता है, क्योंकि वो इनर्शिया बोलते हैं उसको, कि सब कुछ रुका हुआ है और रुके हुई चीज को आपको खींचना है ना, तभी सबसे ज्यादा ताकत लगता है. इसलिए फर्स्ट गियर में हमेशा देखिए गाड़ियों में सबसे ज्यादा पावर रहता है. लेकिन जैसे जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ लगती है, फिर आपको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता. यू हैव टू जस्ट मेंटेन दैट स्पीड एंड कीप अप्लाइंग लिटिल बिट ऑफ पुश टू मेक इट रन फास्टर. तो अभी आप लोग फर्स्ट गियर में चल रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है. जैसे फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जाएगी गाड़ी ना, फिर आपको वो कंफर्ट भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा. बट अगेन व्हेन कम्स टू फीडबैक, आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं किए, ठीक है, बहुत कम थे. In some places, I just felt that selection of word was not right. I'll give you some examples, okay? Yeah. जैसे लास्ट एंड में आपने कहा, my teacher said that because of my challenging, you did no very good. अभी जो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ. आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ. if I'm not right, you can correct me, okay? But वहां पे आप ये नहीं बोलेंगे कि teacher said that because of my challenging. You could say that the teacher claimed or said
that just because I challenged you, you did better. Yeah, sir. You did है ना? better. तो उसने चैलेंज किया था आपको पास्ट में कभी, राइट? सो दैट इज वेयर द वर्ड चैलेंज्ड विल कम इनटू पिक्चर, दैट जस्ट बिकॉज आई चैलेंज्ड यू, you went out of your comfort zone and put that extra effort to get good marks. Again, you don't have to make this kind of sentence. This is my 25 years of English. आप लोग वहां तक आ जाओगे 6 महीने 8 महीने में, but don't make big sentences. You'll say just because he challenged, I could do better. This is one example. ठीक है? But grammatical mistakes आपके नहीं हुए थे, so you can take credit for that. Now, second thing is that you said in the beginning, you said that no, I don't tell you about a story. You will not say I don't tell you. I don't is a present tense. You're talking about something which has happened in the past. So आप बोलेंगे I didn't tell you that story. I did not tell you, or I didn't tell you the story. ठीक है? तो वो तब that is when it'll align perfectly. ठीक है? एक और चीज है जो हम लोग Sir, सब sir, excuse me, sir, please repeat my second mistake. Second one was you said that I don't tell you a story about my past, right? You will not say that I did not tell you, क्योंकि that is something which has happened in the past, है ना? Okay, sir. तो यार सिर्फ ध्यान रखिएगा कि अब if you're talking about something which is in the current times, right? I don't want to eat now. I don't feel like being hungry. I don't like drinking water very often. तो don't अभी अभी का है वो, ठीक है? अभी इसे बोलेंगे I did not drink water whole day. मतलब वो whole day चला गया है, खत्म हो चुका है, ठीक है? I did not drink water. I did not eat. I did not feel like eating. I did not sleep well. है ना? तो वहां पे don't और did not का डिफरेंस को थोड़ा सा, इसलिए जब आप बोल रहे होंगे बीच में अगर हल्का आधा सेकंड का 1 सेकंड का पॉज लेके मतलब सोच सोच के बोलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शे कदम पे, तो आप देखेंगे कि आपको वो सब करेक्शन आप रन टाइम पे कर पाएंगे, है ना? हम जानते होते हैं, सिर्फ यूज करते वक्त में चूक जाता है कभी कभी, ठीक है? ओके? Yes, sir. एक और चीज है जो हम लोग करते हैं, टोल्ड टू, ठीक है? माई पेरेंट्स टोल्ड टू मी, हम नहीं बोलेंगे कभी भी, हम बोलते हैं माई पेरेंट्स टोल्ड मी, बिकॉज टोल्ड इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सेड टू मी, सेड टू, ठीक है? मतलब तो सेड टू हम लोग कोई यूज नहीं करते उतना, माई पेरेंट्स टोल्ड मी, टोल्ड टू नहीं बोलेंगे उसका, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है? वो एक छोटा सा चीज है, प्रैक्टिस आएगा, ठीक है? जैसे आपने कहा कि माई फादर एंड मदर टोल्ड टू मी दैट नो आई कैन डू इट, लेट्स नॉट क्विट, है ना? Yes. तो टोल्ड टू नहीं यूज करेंगे, ठीक है? Yes. अंजलि जी बुरा तो Yes, नहीं sir. मान Yes, रहे? sir. No, sir. टीचर No, sir. टीचर बदमाश है, थोड़ा बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, अभी जाते हैं नेक्स्ट। एक और चीज है जहां पे आई वुड वांट यू टू बी लिटिल मोर केयरफुल। जैसे हम बोलते हैं ना, दिस इज वेरी लीस्ट, आपने एक जगह पे यूज किया था, ठीक है? वी नेवर यूज वेरी लीस्ट, वेरी लेस। लीस्ट मतलब क्या होता है? लेस, लेसर, लीस्ट, ये आपका डिग्री है। लेस मतलब कम, लेसर मतलब उससे भी कम, मतलब जहां पे आप कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज लेसर देन दिस। द प्राइस ऑफ नाइकी शू इज लेसर देन प्राइस ऑफ अ खादिम शू, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? लीस्ट जब आप बोल रहे हैं तभी आप, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ थिंग्स वेयर समथिंग इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। जब वो स्मॉलेस्ट हो गया तब वहां पे आपको वेरी लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. ओके। और अगेन इस क्लास में सबसे मेरा रिक्वेस्ट यही होता है कि हम लोग यहाँ पे हम अपनी गलतियां निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सबको अपनी अपनी गलतियां निकाल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश इज नॉट अवर प्राइमरी लैंग्वेज, मेरा भी नहीं था, आप लोग का भी नहीं है, सो दिस इज नॉर्मल। गलतियां मिलेगी, गलतियां निकालेंगे, खोद खोद के निकालेंगे। अगर कभी मैं नहीं निकाल पाया तो आप निकालिए, ठीक है?
क्योंकि जितना निकालेंगे उस सब गलतियों का इलाज होता चला जाएगा. ठीक है. ओके गोल्डी, योर टर्न. Yeah. Actually, I want to talk about education. My topic is education. So, we know education is very important for successful life. And our education begins from our childhood, and it is lifelong process. No, there is no end of education. How much education we can get, it depends on us. So, without education, we could not get knowledge, and without knowledge, we cannot do anything. So, before some time, in rural areas, some people was uneducated, maybe because of money, because of they had no facilities. But nowadays, everyone knows what is the value of education. You know, nowadays doesn't matter who comes from where. The matter is who is knowledgeable. So education is very important for our life. That's it. वेरी नाइस. तो गोल्डी जी, आपने बहुत समय का बहुत सदुपयोग किया. आपने कोई जल्दी नहीं दिखाई. You made your sentences slowly. I know you have dealt, you keep on dealing with your kids who are all NRIs, who are in US. So that gives you other opportunity to practice. So I did not feel, or I could not find much of a opportunity here. Only in one place where you were saying that because without education we could not succeed in life. So Yeah. could not, when you say could not, meaning that is something that has happened in the past. Here you're not saying anybody's story that no, because of education he could not succeed. You're talking about a generic term which is not a past thing, right? So you are giving an example. You're telling कि अगर नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ होगा. Yeah. Right? So you will not say could, you'll probably say can. So you will say without education we cannot think of a successful life or a brighter future. वहाँ पे Yeah. you have to judiciously choose between can and could depending on the context. अगर आप किसी past event की बात कर रहे हैं, you will use could. If you're talking about a generic strategy or a plan or a guideline, then you can use you will use can. ठीक है? Yeah, I got it. Okay. तो देखिए हम हर एक घाव को कुरेदते रहते हैं. कहीं पे मुझे छोटा सा घाव दिखता है हम कुरेद देते हैं उसको, बिकॉज दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. इसलिए आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि भाई बुरा कोई नहीं मानेगा, क्योंकि हमको सारे घाव को निकालना है बाहर. प्रीति जी, वुड यू वांट टू शेयर समथिंग, या आप अगले क्लास में बोलना चाहेंगे? ठीक है. तो अभी प्रीति जी आपके लिए इतना ही सजेशन रहेगा कि आप जो है डेली एक चीज पे फोकस कीजिए कि भाई अपने लिए 15 मिनट निकाल लीजिएगा. उस टाइम में 15 मिनट में आप किसी को नहीं जानते हैं घर में, सिर्फ खुद को जानते हैं. उस 15 मिनट में आप कोई भी 2 वर्ड चूज कीजिए कि भाई ये 2 वर्ड आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे वो आपका जाना हुआ वर्ड हो या कोई नया वर्ड जो सीख रहे हैं आप. और वो वर्ड को आप लिख लीजिए पेन पेपर लेके, अपना एक नोटबुक रखिए कि ये मेरा वर्ड है. मान लिया जाए आपका वर्ड है स्ट्रैटेजी कि या प्लान, मान लिया जाए, सिंपल लगता है, सिंपल से स्टार्ट करेंगे. आपका वर्ड अगर प्लान, तो उस प्लान पे आप सोचेंगे कि भाई 5 सेंटेंस क्या क्या बन सकता है. सिंपल. दिस इज माई प्लान, दिस इज योर प्लान, दिस इज समबडी एल्सेस प्लान, आई डोंट लाइक अदर्स प्लान, आई ऑलवेज वांट टू प्लान व्हाट आई वांट टू डू, I never wanted to do something which is not done in a planned way. तो वैसे मतलब नहीं, तो एक एक सोचते हैं, सिंपल सेंटेंसेस 4-5 सोच लीजिए, चाहे तो लिख भी लीजिए, है ना. और लिखने के बाद रुकिएगा मत. वैसे 2 शब्द जो आपने 2 वर्ड जो सोचा है, लिख अपने नोटबुक में रख लीजिए, उस पर 5-6 सेंटेंस बनाइए, और उसके बाद कोई मुर्गा पकड़िए. घर में वो मुर्गा आपका फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपके जान पहचान के लोग हो सकते हैं, कि भाई देखो आज 2 वर्ड सीखा है,
इसका ये सेंटेंसेस बनता है, सुनाइए, जबरदस्ती सुनाइए, उनको मजा आया नहीं है, दोनों केस में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, वो कीजिए। अगर वो भी बात नहीं बना तब एक ही मुर्गा है, वो है मिरर, जो कि मना नहीं करेगा। मिरर के सामने खड़े होकर खुद को बोलिए कि टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टू वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज दिस, सेकेंड वर्ड इज दिस, the sentences that I can make from the word this are 1 2 3 सेंटेंसेस बोल दीजिए फटाफट कि भाई मेरा वर्ड प्लान था, प्लान का पहला सेंटेंस ये, दूसरे, मतलब बेसिकली वो झिझक जो होता है ना इंग्लिश बोलने का, उसको उसको गायब करना है, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, आप लिखेंगे तो याद रहता है, बोलेंगे तो और भी ज्यादा याद रहता है। तो हमारा वही स्ट्रैटेजी है ना। तो आपको जब शुरू में बोले कि आप जो है और भी एक दो लोग को फंसाइए इस क्लास में, वो लोग आपके ऑडियंस बन जाएंगे और आप उनके ऑडियंस बन जाएंगे, कि जब आप ये प्रैक्टिस करने रहेंगे तभी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपके पास दो लोग हैं ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं, सीरियस हैं उसको लेकर के, तो भाई चलो मेरा हम 2 वर्ड सुनाते हैं, आप अपना 2 वर्ड सुना आज का। तो दिन में कभी भी बात करके जो अपने क्लोज फ्रेंड हैं, आपके कोई रिलेटिव हैं, उनके साथ आप ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, दैट विल हेल्प। क्योंकि क्लास आपका वीक में 1 दिन हो रहा है, लेकिन बाकी जो 6 दिन है, यू हैव टू स्टे इन टच विथ इंग्लिश एंड यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट। तो इसमें ये मदद होगा उससे, ठीक है, ठीक है ना प्रीति जी? ओके। और अगला कदम जब बढ़ाएंगे तब ये हुआ कि अब जो वो लोग एक दो लोग आपके दोस्त जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, जो भी, उनके साथ में आपको एक और प्लान बनाना पड़ेगा, मे बी आफ्टर 3-4 वीक्स, कि आप डील रखेंगे कि भाई देखो आपके साथ में जब भी मेरी बात तो बहुत होती है या नहीं, जब भी होती है तो शाम में 3 से 5 या 2 से 4 के बीच में अगर आप कभी कॉल करते हैं, हम लोग मिलते हैं, तो उसमें हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे, टूटा फूटा ही सही कोशिश करेंगे। क्योंकि it's see here we're not trying to read books and make our build a knowledge base. Here we are trying to make English as a part of our routine. हमारी दिनचर्या में हम इंग्लिश को लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली वे। अंग्रेज क्या बच्चा पैदा होता है थोड़ी वो इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देता है, उसको माहौल मिलता है अपने आसपास, हर कोई अंग्रेजी बोल रहा होता है तो बच्चा मजबूरी में अंग्रेजी ही बोलता है। फिर हम लोग मलयालम नहीं बोल पाते हैं, मलयालम परिवार में बच्चा पैदा होता है मलयालम ही बोलता है, बिकॉज उसको एनवायरमेंट मिला होता है। नोबडी रीड्स एंड राइट्स, पहला है कम्युनिकेशन, पहला है एनवायरमेंट। तो हम लोग दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड, ठीक है, ओके। तो सभी सभी पार्टिसिपेंट्स, सारे स्टूडेंट से वही बोलेंगे कि आप लोग अपना माहौल बनाइए, अपने फायदे के लिए दोस्त बनाइए, मतलब आपके जो फ्रेंड हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे दोस्ती थोड़ा और गाढ़ा कीजिए, उनको भी इंग्लिश में खींच के लाइए क्लास में, तो आपको एक प्रैक्टिकल ग्राउंड मिल जाएगा एक्चुअली प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है। वो आपके पापा में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली के कोई भी मेंबर हो सकते हैं, या बहुत क्लोज फ्रेंड्स, है ना। ओके, तो अब अगला चीज करते हैं, लेट्स लर्न समथिंग लिटिल इंटरेस्टिंग, उसको बोलते हैं इडियम्स, ठीक है। अब 2-3 इडियम सुनाते हैं आप लोग को। आप लोग के पास कोई इडियम है, अगर कोई ऐसा जानते हैं कि जो शेयर करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो हम शुरू करेंगे, 2 या 3 सुनाएंगे, ज्यादा नहीं। मीन्स फ्रेज? नहीं, फ्रेज नहीं, ये इडियम्स मतलब जैसे मैं एग्जांपल दिया ना, केक वॉक वाज एन एग्जांपल, कि दिस इज अ केक वॉक, आई एंजॉय स्टडिंग मैथ्स बिकॉज मैथ्स is a cakewalk for me. I enjoyed teaching kids the classical music because I believe classical music could become a cakewalk if practiced very often. So cakewalk जो है is a representation of something being very simple in a stylish way. Don't give me these kind of problems to solve. These are cakewalk for me. What is the meaning of cakewalk? Cakewalk. तो केक वॉक को अगर सोचेंगे, उसको देखिए, इडियम्स का मतलब ही होता है कि जो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच डजंट गो बाय इट्स लिटरल मीनिंग। तो केक और वॉक मतलब, केक मतलब जो केक हम जो खाते पीते हैं केक, और वॉक मतलब चलना है। तो ये केक की चाल नहीं है, ये केक वॉक है, विच मीन्स समथिंग विच इज वेरी इजी।
तो इसको हम लोग इसको हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में व्हेन वी हैव टू नो शोकेस कि दिस इज अ केक वॉक. I can say I have got enough opportunity to learn English and make it a part of my routine. It was never a cakewalk for me 25 years ago. 25 साल पहले मेरा पसीना छूट रहा था. आप लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं. हमको बोले ना, मेरा जब हम 10th ग्रेड में थे तो पहली बार हम माय नेम इज वीरेंद्र कुमार बोल रहे थे अंग्रेजी में, और हमको लगा था हम दुनिया जीत लिए. दैट वाज माय फर्स्ट सेंटेंस. So that's what I'm saying. So cakewalk is something that means or represents something being very easy. You know? So this is your first this thing. You all are learning English today. I know it goes through its own rigor, but trust me, it will become a cakewalk in future. ठीक है. तो पहला इडियम आप लोग सीख गए, वो है केक वॉक, केक की चाल. ओके, तो ये हो गया आपका पहला इडियम. दूसरा एक और सुनाते हैं, वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है. आप लोग यूज किए हैं कि नहीं, नॉट श्योर. उसको बोलते हैं मूसलाधार बारिश जो होती है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में इट्स रेनिंग. Cats and dogs. हाँ, people say it's raining heavily and stylish people say it's raining cats and dogs. तो पहली बार जब सुने थे रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मेरे को टेंशन हो गया, कुत्ता बिल्ली का बारिश हो रहा है. बट इट मीन्स इट्स रेनिंग हेवीली. In sentence, if we use, so we can say it rains cats and dogs. नहीं, It's आप raining. बोलेंगे That's it. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. Okay. तो आप बोलेंगे डोंट आस्क मी टू गो आउट टुडे आफ्टरनून, इट्स गोइंग टू रेन कैट्स एंड डॉग्स. I got completely drenched because it was raining cats and dogs. So we can use only this phrase in raining, It's only for related rain. to raining. It's related to rain, yeah. At least I have not heard this being used in any other situation. Mostly it is related to rain. Okay. ये दूसरा हो गया. एक और सुनाते हैं, उसके बाद वी विल स्टॉप, क्योंकि बहुत ज्यादा डोज भारी पड़ता है. लेट्स डू स्मॉल बट मीनिंगफुल. थर्ड वन इज आइस ब्रेक. मतलब बर्फ को तोड़ना. उसका वो मीनिंग नहीं होता. इडियम्स का मेन पर्पस ही होता है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है उसका मीनिंग बिल्कुल अलग होगा. सो यू कैन नॉट गो बाय द लिटरल मीनिंग ऑफ दैट. तो आइस ब्रेक मतलब बर्फ का टूटना, ऐसे होगा लिटरल मीनिंग. जो कि यहाँ पे आइस ब्रेक होता है, इट्स लाइक कमिंग आउट ऑफ योर or getting started actually. Something, it's like I was never into the sports field. I just ran on the track one day and that did the ice break for me. Or when you started your English speaking classes, that is when you did the ice break. आइस ब्रेक का मतलब कुछ चीज होता है, तोड़ के बाहर निकला या स्टार्ट हुआ, ऐसा बोल सकते हैं उसको. जो चीज को आप स्टार्ट करते हैं, है ना. I had my discomfort with science, but I had to do the ice break. मतलब मेरे को कहीं ना कहीं पे स्टार्ट करना था. तो ये तीन जो हमने सीखा, कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आइस ब्रेक और केक वॉक, ये तीन जो है, ये तीन इडियम्स जो है, आप लोग से यही बोलूंगा कि आप लोग चाहे तो अपना एक नोटबुक रखा कीजिए, उसमें आधे में वर्ड्स लिखिएगा, आधे में इडियम्स लिखिएगा. इडियम्स यू डोंट नीड टू हैव 5000 इडियम्स. वर्ड्स तो आप 5000 रखिए, 10,000 जितना भी सीखिए काम ही आएगा.
ईडीएम्स का मैं देखा हूँ जनरली बहुत ज्यादा स्टाइलिश लोग जो होते हैं उनके पास 50-60 ईडीएम रहता है। 50-60 ईडीएम आपका अगर वोकेबलरी में है, आप उसको कॉमनली यूज करते हैं और सही से यूज करते हैं, you are in the top 10% of the English speaker across the globe. मतलब 7 बिलियन लोगों में से टॉप 10% में आप आ जाएंगे अगर आप इडियम्स का यूज करते हैं इफेक्टिवली। 50-100 इडियम्स का अगर आपका वोकेबुलरी एकदम स्ट्रांग है, आपके रूटीन का पार्ट है, तो समझिए कि that's the level of style it brings into your communication skill. तो मेरा यहाँ पे लालच यही है कि आप लोग को इडियम। हाँ बोलिए। Idioms means मुहावरे. मुहावरे, मुहावरे ही बोल सकते हैं उसको। हाँ, तो मेरा लालच क्या है, आप लोगों को सिखाने के क्रम में हम भी चाह रहे हैं कि मेरा भी इडियम का वोकेबलरी जो है 50-100 हो जाए, जो हम यूज में ले आए अच्छे से। मतलब मेरे पास होगा, हमको लगता है 25-30 तो होगा शायद, लेकिन हम बहुत कॉमनली यूज नहीं करते हैं उसको। तो आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करते करते मेरा भी अच्छा हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, और इस क्लास का वीडियो जो भी है इसको बाद में कभी टाइम निकाल के, वीक में एक दिन कर रहे हैं तो 50-60 मिनट का वीडियो हो जाता है, इसमें डेटा भी इसमें खर्चा होता है। तो डेली पूरा पूरा क्लास एक दिन में देखने की जरूरत नहीं, 10-10 मिनट करके भी देख लेंगे तो नहीं, तो उसमें से जो कुछ काम का पॉइंट्स रहेगा जो आप भूल गए रहेंगे उसको नोट कर लेंगे, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि अगले क्लास में जब आए तो यू कम मोर प्रिपेयर्ड। एंड प्रीति जी, अगेन एज आई सेड कि आप अपना जर्नी आज से आपने स्टार्ट कर दिया, आपने आइस ब्रेक कर दिया है आज, तो 2-2 वर्ड सीखना, नोट करना, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। देन वी विल सी द जर्नी गोज, है ना। बट आपको क्लास में was I going very fast or it was okay for you? नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा था या आप मुझे फॉलो कर पा रहे थे। ओके, नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज सी एज अ टीचर आई ऑल्सो नीड फीडबैक कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस टीचर है तो कुछ भी बोल के चला जाएगा। तो आप लोग भी थोड़ा फीडबैक देते रहेंगे तो इट विल हेल्प मी इम्प्रूव माई स्टाइल, इट विल मेक मी अ बेटर स्पीकर ऑल्सो। ठीक है, ओके, ऑल राइट, चलिए फिर आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीक। ओके, बाय गोल्डी, बाय अंजलि, बाय Bye. बाय बाय। Okay, sir. Bye. Thank you, sir. Yeah, bye.